So now with the fall of the Napoleon, we have seen that first when the Napoleon Code was issued in various countries of Europe, that time people were very happy. But when we read about the fall of the Napoleon, clear? So we have to see the reasons. See on page number 7. Page number 7, second paragraph towards the end. First, I'm going to read that in the areas conquered, that is conquered by Napoleon, the reactions of the local population to French rule were mixed. Mixed means that some people were happy, whereas the other people were not very happy. So what were the reasons that the people were not happy? Then come down and see the last 3 lines. You have to underline these. Increased taxation, clear? Censorship, increased taxation, you understand? That the tax which the people had to pay, already we know that the French society was suffering. Next, censorship. Censorship means that what can be published, what can be made public, and government has its restrictions on that. Then forced conscription. So underline this word, forced conscription means that at that time people were being recruited forcefully to provide their services for the state. We know that at that time war was going on, clear? And we read about the forced recruitment in India as well, when we read that British participated in the First World War at that time also, clear? And that became one of the reasons that the people in India were not happy with the British, because of the forced recruitment being made by the British. So similarly, here the word is conscription, that is to enroll, recruit people to provide compulsory service for the state into the French armies required to conquer the rest of Europe. So all these 3 reasons, that is increased taxation, then censorship and forced conscription, these brought about some discontent among the people, and that became the reason for the fall of Napoleon. Now come to page number 8, that is the making of nationalism in Europe. Now why we are saying the making of nationalism? You remember before this I had discussed one word with you, forged, F-O-R-G-E-D, clear? Generally, I told you that we use it that we have made the duplicate signature or we are trying to copy something which is illegal. और एक मैंने आपको बताया था forged का मतलब होता है कि किसी चीज के साथ उसको मिला के उसको और strong करना, right? So that is why when we are saying here the making of nationalism in Europe, अगर हम इसका literal meaning लें तो making का मतलब हो जाता है कि बनाना, ठीक है? तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब है कि उस तरह से उस टाइम पे कैसे सर्कमस्टांसेस, क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी यूरोप की उस टाइम पे. And we have already read this, that Europe was under various kinds of dynastic rules, clear? And different dynasties, monarchies. जब हम dynasty कह देते हैं तो उसका clear cut meaning हो जाता है monarchies. And in the monarchies we know that the king has the supreme power, clear? So we'll come to the second, we'll leave the first 2 lines. Next you see what we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms. That's why we are going to study the unification of Germany, Italy and France. That day, as one of the students had raised the question that, ma'am, Italy cannot be seen in the map because Italy was not a united state at that time. As in India, India was being called as one country since ages, but still it was being ruled by different princes, different kings in different parts. And at that time also Gandhi ji had to tour India. There were many leaders who were involved in creating this
this nationalism spirit among the people to come together and fight for a common cause. So similarly, in Europe, they were divided into kingdoms, duchies. Duchess means that an area within a larger territory which is ruled by a duke and a duchess. Clear? Which is ruled by a duke. And duke is lower in the hierarchy to the king or the queen. जैसे यूके में अभी भी ये सिस्टम चलता है, ठीक है, right? And we have the queen who is the highest in the hierarchy. Then we have Prince Charles, and there are so many. So similarly, Duchess word is used over there to those areas, to designate those areas which are ruled by the duke. And cantons. Cantons are again smaller areas within a territories whose rulers had their autonomous territories. Autonomous territories का मतलब होता है कि एक होली सोली एक रूलर के पास वो एरिया उसके अंडर था, ऑटोनॉमस. क्लियर? सो इसमें से आपको बस इतना ही लर्न करना है. You have to pay attention to this much only. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies. Autonomous, autocratic. Clear? Means जब हमने monarchies कह दिया और उससे पहले autocratic कह दिया, तो autocratic का मतलब ही होता है कि single. Clear? Monarchies within the territories of which lived diverse people. Clear? People belonging to diverse communities, heritages, lineage. Lineage का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी जर्मनी का एग्जांपल दिया था कि वो तो चलो टुवर्ड्स द सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जब हिटलर became very popular in Germany, that he wanted to reduce the number of other communities in Germany, and he wanted that only Germany should have pure Aryans. जो जर्मनी में कौन होने चाहिए? Those who are pure Aryans. Is it clear? But उस टाइम पे यूरोप में जो थे people belonging to diverse, clear, groups lived. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. तो वहां पर भी जो लोग थे वो छोटी छोटी कम्युनिटीज, जैसे हमने इसका बेल्जियम का और श्रीलंका का एग्जाम्पल हमने पढ़ा है कि वहां पर कितनी फ्रेंच थे, जर्मन्स थे, डच थे. क्लियर? इन बेल्जियम वी हैव रेड. देन वी हैव रेड इन श्रीलंका we had Sinhalas, we had Tamil, we had Indian Tamils. Clear? And they were also following different religions. They had different cultures. तभी जब बेल्जियम और श्रीलंका में प्रॉब्लम आई, तभी हम पढ़ते हैं ना मेजॉरिटेरियनिज्म. कैसे पावर शेयरिंग में हम क्यों ये एग्जांपल पढ़ते हैं कि कैसे उन अलग अलग कम्युनिटीज को अकोमोडेट करने के लिए बेल्जियम ने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया और श्रीलंका ने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया. क्लियर? सो कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड कॉमन कल्चर. उस टाइम पे लोगों को इस चीज की अवेयरनेस नहीं थी कि हम सब लोगों ने इकट्ठे होके अपनी कंट्री को यूनाइट करना है. इसीलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि कैसे उन लोगों को इन सब बातों के लिए अवेयर किया गया. राइट? जैसे हमने अपने इसमें इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में भी हमने पढ़ा था ना कलेक्टिव. क्लियर? कि बाद में, इससे पहले हमने फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का पढ़ा है कि व्हाट वर द मेथड्स अडॉप्टेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस और वो तभी आएगी जब हमारे में ये अवेयरनेस आएगी दैट वी आर नॉट डिफरेंट. मैंने आपको यही बात बताई थी कि जब अगर अपने आप को हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, अगर हम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं तो हम पहले अपने आप को वो समझते हैं, ठीक है, उसके बाद हम अपने आप को इंडियन समझते हैं, तो देन इट मींस दैट वी आर नॉट हैविंग दैट स्पिरिट ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. राइट? हमारे पास स्पिरिट ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस टू अ नेशन, हमारी एक जो कंट्री है वो एक नेशन कब बनती है? वो तब बनती है जब हमारे अंदर एक कलेक्टिव स्पिरिट हो. हम अपने आप को पहले इंडियन समझे और उसके बाद हम समझे कि हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं.
right? So now let's come towards the end of this paragraph, that such differences did not easily promote a sense of political unity. अब आप देखो कि ब्रिटिशर्स के अंडर हमें कितने साल लग गए. Clear? We had to struggle so much to make the people aware that their benefit lies in being together. And जब हम सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ते हैं, तो तब मैंने आपको कराया था कि नॉन कोऑपरेशन का मतलब ही ये है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में क्यों सक्सेसफुल हुए हैं. वो इंडिया में इसलिए सक्सेसफुल हुए हैं बिकॉज द इंडियंस हैड कोऑपरेटेड विद देम. उस टाइम पे हमारे में ये जो फीलिंग, नेशन को फीलिंग, उसके बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग थी, वो नहीं थी हमारे में. क्लियर? तो कितने साल लगे, कितने तरह के मेथड्स अडॉप्ट करने पड़े, कितनी अलग अलग प्रोटेस्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, डांडिया, कितना कुछ करना पड़ा हमारे लीडर्स को, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, टू ब्रिंग द पीपल टुगेदर टू फाइट फॉर अ कॉमन कॉज. Clear? So the same thing we are reading in Europe, that such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. उस टाइम पे जैसे हमने इटली का एग्जाम्पल पढ़ा पिछले, उसमें हमने देखा दैट इटली डिवाइडेड इनटू किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, स्मॉल स्टेट्स. ठीक है, तो ये इटली के अलग अलग पार्ट हैं. तो जहां किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है, जो भी उसको रूल कर रहा है, लोग उसी को बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है, जैसे इंडिया में अगर नॉर्थ, अपर नॉर्थ में पार्ट में और मिड, जो इंडिया का मिडिल इंडिया था, उसमें अगर मुगल डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो लोग उसी को अपना सब कुछ समझते थे. ठीक है, बिलो मध्य प्रदेश, उसके नीचे अगर कोई और डायनेस्टी थी, कोई और किंग रूल कर रहा था, तो लोग उसको ही अपनी कंट्री समझते थे. They did not think that the places from Jammu and Kashmir to Kanyakumari is one, that we belong to a country called India. Clear? तो उनकी जो allegiance का मतलब होता है कि the loyalty, हम अपनी लॉयल्टी किसको शो कर रहे हैं, हम उस एरिया के रूलर को ही शो कर रहे हैं. We are not showing our spirit of patriotism to a कंट्री रूलर. क्यों? क्योंकि हमारा उस टाइम पे यूनाइटेड नहीं था. तो इसी तरह यूरोप में भी द सेम इश्यूज वर देयर. नाउ नेक्स्ट इज द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. ये हमने अगेन फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था. मैंने आपको बोला था कि आप फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th स्टैंडर्ड की बुक में से एक बार दोबारा पढ़ लो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है बेटा, क्योंकि जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का रेफरेंस अगेन एंड अगेन इट इज कमिंग. सो आई डोंट हैव द टाइम कि मैं आप सबको बोलूं कि 9th स्टैंडर्ड की बुक लेके और हम उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन दोबारा पढ़ेंगे. अब आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ ली है, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में, तो आपने सिर्फ एक बार उसको रीडिंग लगानी है. सो द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. So the socially and political, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. Landed aristocracy. Landed aristocracy means that those people who were the owner of the land, जिनके पास जमीनें थी, जैसे हम जमींदार कहते हैं यहाँ पर. Landed aristocracy, it means those people who were having money, who had good position in the society, clear, and they had land, were the dominant class in the continent. The members of this class were united by a common way of life cut across the division. They owned estates. You can underline this. Landed aristocracy, right? They were the owner of the estates in the countryside and also townhouses. Estates हम कहते हैं, जैसे आजकल हम कहते हैं फार्म हाउसेस हैं, हमारे इतने बड़े बड़े खेत हैं. ठीक है, that much of area I have. So we are using the word estates in Europe, and also townhouses. It means that their property was not only restricted to the countryside. हम कह रहे हैं landed aristocracy, that they were the owners of the land. तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ रूरल और या कंट्री साइड, यूरोप में दे आर यूजिंग द वर्ड कंट्री साइड में ही नहीं थी, इट वाज आल्सो स्प्रेड इन द टाउन एरियाज एज वेल. They spoke French for the purpose of diplomacy in the
हाई सोसाइटी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के थे। यहाँ पर डिप्लोमेसी वो डिप्लोमैट वाला वर्ड डिप्लोमेसी नहीं है, यहाँ पर मीन्स कि अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए सोसाइटी में दे वर यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच एंड दे वर कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज। कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज मीन्स कि अपने आप में उन्होंने अपनी फैमिलीज को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपनी अरिस्टोक्रेसी का लेवल मेंटेन करने के लिए, बिकॉज दिस इज विच द फर्स्ट एस्टेट, द सेकंड एंड द थर्ड एस्टेट। अगर हम फ्रांस में उन 3 एस्टेट्स का हमने पढ़ा था ना, सो अरिस्टोक्रेसी वर एट द हाईएस्ट लेवल। तो उन्होंने अपनी ये जो पोजीशन थी उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया हुआ था? बाय द टाइज ऑफ marriage. Today I'm going to share these question answers with you, so when you will read the points that will be much clearer to you. But they were numerically small. तो ये तो हमें पहले ही पता है कि जब हमने फिर again and again I have to give reference of French Revolution में किया था फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एंड द थर्ड एस्टेट। तो उस टाइम पे हमने किया था कि जो फर्स्ट एस्टेट के लोग थे they were numerically small in number and who were larger in number? The peasants. Clear? So ये the next is the majority of the population was made of the peasantry. जो peasantry कौन है? वो लोग जिनके पास landless workers, those who don't have clear land of their own, but they are working on the land of the other people. Clear? ये peasant word is not new. You have read it so many times. The bulk of the land was farmed by tenants and small owners, while in Eastern and Central Europe, the pattern of landholding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. तो अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, 2 वर्ड्स हैं, एक बार हम peasants वर्ड्स भी यूज कर रहे हैं and next time we are using the word serf. Clear? S-E-R-F. Serf, serfdom. Feud, feudal lords, feudalism. ये भी हमने किया है। फ्यूड मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन वी आर रेफरिंग टू अ पीस ऑफ लैंड, फ्यूड। क्लियर? फ्यूडल लॉर्ड, ओनर ऑफ दैट लैंड, एंड द होल सिस्टम फ्यूडलिज्म। क्लियर? इसी तरह सर्फ, दोज पर्संस हु वर एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ द अरिस्टोक्रेट्स। सर्फ कहने को तो लोग थे, ठीक है, they were not slaves, हम उनके लिए slaves word नहीं यूज कर सकते, but somewhere or the other they were property of the owner and they worked on the estates of those aristocrats as and how the aristocrats wanted. Clear? तो जो peasants थे वो, जैसे मैंने आपको बताया, जो ड्यूक है वो किंग से, किंग की हायरार्की में नीचे है। इसी तरह जो सर्फ है एस, वो पीजेंट्स की हायरार्की में सबसे नीचे है। अगर हम पीजेंट्स की कैटेगरीज करें, ठीक है, उनको कैटेगरीज में करें कि कौन से पीजेंट्स हैं जो थोड़े बेटर हैं या जिनके लिए वर्ड हम ये यूज कर रहे हैं, और सर्फ में क्या डिफरेंस है। सो इट मींस दैट विद इन द पीजेंट्स, क्लियर, सर्फ्स वर दोज who were at the lowest level. काम दोनों ही कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं और सर्फ्स भी कर रहे हैं और पीजेंट्स भी कर रहे हैं, but they are at a lower level. And in Western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and emergence of commercial classes. Is it clear? So what happened that at side by side 1750 mein industrialization had already come in England, and the effect was that there was another class, that is the class of the working people who used to work in those who started working in the industries, and people from the rural areas also started coming to the cities. Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of Germany, it occurred only in the 19th century. In wake of this, a new social group came into being. That is page number 9 पे आप देखो, underline this, that as a result of the industrialization which came in England first of all, and then in France and Germany and other parts of the world, a new working population and middle class made up of industrialists, businessmen, professionals, that arose. तो अब मिडिल क्लास में it consisted of which people? It consisted of those social groups
those who were working class population, and they were termed as the middle class. They were industrialists, they were businessmen, and they were professionals. Professionals means doing any kind of job. So in the late 19th century, it was among the educated liberal middle classes, the idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. तो हमें पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो one of the results was that the removal, taking away of the aristocratic privileges. Clear? So that's all for today. If you have any difficulties, if it's something which is not clear to you, if you have any doubt, so you can ask your doubt.